welcome to the Officer Adda 24/7, the special session of the BRBL subject in the bilingual language. So I hope so मेरी आवाज आप सबको यहाँ पे अच्छे से सुनाई दे रही होगी. My voice is audible and the screen is visible to all of you. Now we are going to start a session जहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन अपना. सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है that what is the significance of Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme 2021 in the banking industry. ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है आपको मालूम होना चाहिए. ये जो आप लोग का एक्ट है 3 एक्ट को रिमूव करके बना है. सो पहला इसका सिग्निफिकेंस है इट्स प्राइमरली फोकसेस ऑन रेगुलेटिंग द इंटरेस्ट रेटेड ऑफर बाय बैंक. It is a crucial development providing an expeditious and inexpensive forum for resolving the bank customer complaint. It is exclusively deal with the issue related to the digital transaction and cybersecurity. Yeah, it's aimed to promote the competition among the banks. So बताइए इसका exact आंसर क्या है. Yes, class. द रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम का बेसिक थीम क्या है. देखिए, पहले कोई भी जब मैटर होता था वी कैन इजीली सॉल्व थ्रू द कोर्ट. लेकिन जब से आप लोगों के लोक अदालत हो गया, कंज्यूमर फोरम हो गया, ओम्बड्समैन हो गया, तो बैंक के मैटर आप लोगों के यहाँ भी जा सकते हैं. तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा. इट इज़ अ क्रूशियल डेवलपमेंट प्रोवाइडिंग एन एक्सपीडिशियस एंड इनएक्सपेंसिव फोरम फॉर रिजॉल्विंग द bank customer complaint. So first ka B is the right answer. Is that okay? First ka B is the right answer for this question. Okay, now the next one. What are the primary function of National Board for Micro, Small, Medium Enterprise? प्राइमरी फंक्शन क्या है इस बोर्ड का. तो हमने इस एक्ट में बोर्ड और एडवाइजरी काउंसिल के बारे में पढ़ा था. तो बताइए. मैनेजिंग फंड फॉर एमएसएमई. सेकेंड है एग्जामिन द फैक्टर अफेक्टिंग द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई. Reviewing government policies and program, making recommendation to the central government and advising on the use of fund, providing financial support to MSME या representing the trade union globally. बताइए इसका exact answer क्या होगा. MSME.
Yes, class, what will be the right answer for this question? So, what is the primary function of this board? The primary function of this board is to examine the factor affecting the promotion and the development of MSME, reviewing the government policies and program, and making recommendation to the central government. This, so class B is the right answer. Second का B will be the right answer. इज दैट ओके? किसी भी एक्ट के क्वेश्चंस को करने से पहले अगर कॉन्सेप्ट याद है तो ठीक है, ठीक है, अदरवाइज यू हैव टू फोकस ऑन दी। ओके क्लास, तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इन द केस ऑफ मारिया केमिकल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, याद करिए जब हम लोगों ने सरफेसी एक्ट पढ़ा था तो ये केस आप लोग का आया था। सो इन द केस ऑफ मारिया केमिकल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, what did Supreme Court declare regarding the constitutional validity of SARFAESI Act 2002? Entire act is constitutionally invalid. Entire act is constitutionally valid. The act is valid except the part of section 17 clause 2, या the act is valid except section 18. So बताइए क्लास, इसका exact answer आप लोग का क्या है? What is the right answer for this question? मारिया केमिकल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में आप लोगों का किस प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट ने बोला दैट दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल? वैसे भी जब भी आप लोग का डीआरटी एक्ट आया, सरफेसी एक्ट आया, तो हमेशा किसी ने केस फाइल किया कि दिस एक्ट इज टोटली इनवैलिड, राइट? तो आपको बताना है इसमें से इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। सो क्लास देखिए, 17 क्लॉज 2 सबसे पहले सेक्शन क्या था? बोरोवर को अगर केस फाइल करना है डीआरटी में तो उसको 75% अमाउंट पहले पे करना पड़ेगा, देन ही कैन फाइल द केस। तो ये क्या आपको टोटली वैलिड लग रहा है? बिल्कुल गलत है। सो ये एक्ट आप लोग का वैलिड कहा गया, लेकिन ये सेक्शन को वैलिड नहीं कहा गया। सो दैट्स व्हाई सी इज द राइट आंसर। इज दैट ओके क्लास? सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट। What must the secure creditor बोले तो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, so what must the secure creditor do to request assistance for taking possession of the secured asset? बताइए, what must the secure creditor do to request the assistance of taking possession of secured asset? Call the relevant authority, submit a verbal request, submit a written request to the authority within the jurisdiction the asset is located, and notify the borrower directly. What is the right answer, class? What must the secure creditor do? Request the assistance of taking possession of the secured assets. सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना होता है कि ये एक्ट आप लोगों का किस पर्टिकुलर एक्ट का गिवन है।
What must the secured creditor do? Request the assistant for taking possession of the secured asset. Call the relevant authority, submit a verbal request, submit a written request to the authority within whose jurisdiction the asset is located. So fourth ka C is the right answer. Fourth ka C will be the right answer for this question. Is that okay? Next. If a civil suit is transferred to the tribunal under section 31 clause 1 of DRT Act, what is the implication regarding the fees? बताइए, मतलब मान लीजिए आपका जो DRT एक्ट आया है ये 1993 में आया है। इससे पहले अगर कोई एक्ट आप लोग का सिविल कोर्ट में चल रहा था, ठीक है, तो सिविल कोर्ट से ट्रांसफर हुआ DRT में, सो बताइए फीस कितना होगा? No fees is required, additional fees is required, fees are determined by the tribunal, या fees are waived for the plaintiff. What is the right answer? If a civil suit is transferred to the tribunal under section 31 clause 1 of DRT, what is the implication regarding the fees? कोर्ट में इंसान जाना इसलिए पसंद नहीं करता, इसका एक रीजन है कि यार कोर्ट में जाने का मतलब एक तरह से बोला जाता है जिसके पास पैसे हैं वो कोर्ट में जा सकता है। ये रियलिटी भी है। हर एक चीज के लिए आपको कोर्ट के द्वार खटखटाने, हर एक चीज के लिए इवन आपको फीस पे करना है, तब जाके आपके सारे काम होंगे। ये रियलिटी है। हम लोग एडवोकेट है, हम लोग देखते हैं ना कैसी कैसी चीजें होती हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू। हाँ जी क्लास, इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? सबसे पहली बात, जब भले ही कोर्ट में मैटर चल रहा है, जब यहाँ पे DRT में ट्रांसफर होता है, नो फीस इज रिक्वायर्ड, सो फिफ्थ का ए विल बी द राइट आंसर। इज दैट ओके? फिफ्थ का ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, आर ट्राइब्यूनल एंड appellate ट्राइब्यूनल बाउंड बाय द सिविल प्रोसीजर कोड 1908? बताइए। Are the tribunal and appellate tribunal bound by the Civil Procedure Code 1908? Yes, no, they are exempt, only partial bound and only during the appeal procedure. देखो CPC क्या होता है, एक ऐसा लॉ का बुक। देखिए हमारे इंडिया में ना दो ही तरह के केसेस आप लोग के होते हैं, सिविल होता है और आप लोग का क्रिमिनल केस होता है, ठीक है। सिविल केस में पर्सन वर्सेस पर्सन का मैटर, क्रिमिनल केस में एक पार्टी आप लोग का स्टेट होता है, स्टेट वर्सेस डैश। तो सिविल पर्सन वर्सेस पर्सन, सो ट्राइब्यूनल appellate ट्राइब्यूनल बार्न बाय द CPC, द आंसर इज नो, दे आर एग्जाम्प्ट, क्योंकि ट्राइब्यूनल appellate ट्राइब्यूनल दे कैन मेक देयर ओन प्रोसीजर। क्या है? दे कैन मेक देयर ओन प्रोसीजर। इज दैट ओके? सो दिस इज द राइट आंसर। तो सिविल प्रोसीजर जो सिविल केसेस होते हैं, मतलब पर्सन वर्सेस पर्सन, जैसे भाई भाई के प्रति प्रॉपर्टी का मैटर है, हस्बैंड वाइफ का मैटर है, दैट इज अ सिविल मैटर। तो सिविल मैटर में हम सिविल कोर्ट जाएंगे, तो सिविल कोर्ट में क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा एडवोकेट कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने के लिए? तो इसके लिए लॉ बुक है CPC 1908, और आप लोग का क्रिमिनल केस में CRPC बोलते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। बट अब ये लॉ आपका चेंज हो चुका है, अब बन चुका है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। मतलब ये
क्रिमिनल केस में प्रोसीजरल लॉ का नाम चेंज हो गया है, दैट इज BNSS 2023. So this is the right answer. Is that okay? This is the right answer for this question. Done, class? Okay, that's cool. Next. Which tribunal act as a appellate authority for corporate debtor under the Insolvency and Bankruptcy Code? सबसे पहला नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, दूसरा डेब्ट रिकवरी एपेलेंट ट्राइब्यूनल, सी नेशनल कंपनी लॉ एपेलेंट ट्राइब्यूनल, या डी है सुप्रीम कोर्ट. व्हाट इज द राइट आंसर? Which tribunal act as the appellant for the corporate debtor under the Insolvency Act? तो हमें Insolvency Act में मालूम है दो आप लोगों के अथॉरिटी है, that is DRT and DRAT. सॉरी, DRT and NCLT, ये दो आप लोगों के, ठीक है. सो यहाँ पे आप लोगों का नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, DRAT, NCLAT या सुप्रीम कोर्ट. सो विच ट्राइब्यूनल एक्ट एज अ appellant authority for this corporate debtor? सो corporate debtor, that is NCLT. सेवेंथ का A is the right answer. ठीक है, सेवेंथ का A will be the right answer for this question. Next. What is the status of certified copy of entry in a banker's book in the legal proceeding? It is only received as secondary evidence. It is prima facie evidence of the existence of entry. It is admissible only if the original entry is unavailable. It requires additional proof to be considered in the court. What is the right answer? What is the status to be certified copy of entry in the banker's book in the legal proceeding? बताइए इसका exact answer. It is only received as the secondary evidence. It is prima facie evidence of the existence of entry. It is admissible only if the original entry is unavailable, या it requires additional proof to be considered. What is the right answer? सो क्लास, यहाँ पे बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट में जब भी कोई आपका एविडेंस पेश किया जाता है, इट इज द प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द एंट्री. प्राइमा फेसी एक लीगल वर्ड है, इसका मतलब होता है ऑन द फेस ऑफ इट. दैट इज द राइट आंसर. सो एट्थ का बी इज द राइट आंसर. एट्थ का बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Is that okay? Next one. According to Delhi High Court case ICICI Bank Limited versus Kapil Dev Sharma, when it is necessary for a bank to produce the original document in the court. देखो क्लास, एक जर्नल सेइंग है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को कभी पेश नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोगों का. ओके, द क्वेश्चन इज व्हेन it is necessary for the bank to produce the original documents in the court. जल्दी बताइए. Always, regardless of the circumstance, only when requested by the court, only if the documents are disputed, yeah, only in the criminal proceeding. What is the right answer? According to the Delhi High Court case, बताइए कब, when it is necessary for a bank to produce the original document in the court. So when, only if the documents are disputed, then.
सो नाइन्थ का सी विल बी द राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट, what is the provision for filing an appeal after the dispute is settled in a Lok Adalat? What is the provision for filing an appeal after the dispute is settled in the Lok Adalat? Appeal is allowed in a regular court. Participant can file an appeal in Lok Adalat itself. Settlement is considered final. There is generally no provision for filing an appeal. An appeal is only possible in the criminal case. So यहाँ पे class, what is the provision for filing appeal after the dispute is settled in the Lok Adalat? तो यहाँ पे class, this is the right answer. So class, ये आप लोग का session है और जल्दी से क्रैश कोर्स में इनरोल कर लीजिए. ठीक है, क्रैश कोर्स में इनरोल करिए. ये आप लोगों का जो बैच है, दिस इज मेरा बैच 11 नवंबर से शुरू है. टाइमिंग आप लोग का 10 से 11 बजे का है. तो प्लीज़ सेशन में इन्वॉल्व ज़रूर होइएगा. ठीक है, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. और आप लोग के पास सिंगल बैच भी है. आप कोई सा भी बैच ले सकते हैं बाय अप्लाइंग द कूपन कोड Y391 फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट. तो फटाफट बैच में इनरोल